Okay, welcome to my next video, which is about finite differences, and obviously that is a very important topic in numerical analysis. Okay, uh, finite differences which can be used in interpolation, which is obviously a very important topic, and it can be used in finding derivatives of different type of functions, and we can use it for finding numerical integration as well, and the same can be used for finding solution of differential equation. That's the numerical solution of differential equation. So it plays very important role in numerical analysis. और मेरा जो आज का मेन फोकस होगा that will be about construction of difference table by using calculator and by using Matlab as well. Okay, so let's start with it. So what are finite differences? Basically, we take difference of two consecutive values. That's the upper value minus the lower value, or next value minus previous value. Okay, so we talk about difference table. So let's suppose we have a table of function values for y is equal to f of x, or equally spaced data. Later on, we'll be talking about divided differences, in which obviously we'll be not imposing this restriction that the data is equally spaced, the value of x are equally spaced. Okay, so let's suppose we have this table like that for values of x, x0, x1, x2 up to xn, keeping in mind that ये जो values होंगे x की ये सारे के सारे equally spaced होंगे, mean to say x1 minus x0, x2 minus x1 up to so on, ये सारे values जो होंगे they will be same. Okay, and obviously the values of y will be computed from the function. If the function is not given, obviously in most of the cases we don't know the function, उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में फिर हम जो ऑब्जर्व डाटा होता है, जो डाटा आपने ऑब्जर्व किया है, कहीं से रीड किया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं. ओके, राइट. सो that what I mean. I said that x1 minus x0, x2 minus x1 up to xi minus x minus 1, they all of them should be of same width, so we'll replace that by h. And from that purpose, we can say that x1 could be written as x0 plus h, x2 could be written as x0 plus 2h, and so on. Generally, we write xp, which is equal to x0 plus ph. Okay, and corresponding the values of y, when we say yp, that means f of xp, mean to say y naught, it will be f of x naught, and y1, that would be f of x1. In other words, we can say that it is f of x naught plus h, or x naught plus 2h, and so on. And symbolically, we may use this notation as well. You can use yp or you can use fp, it's the same thing. Okay, now we define the first order finite difference as I said, the difference between two consecutive values. That's the yr plus 1 minus yr. It means that you have to subtract y0 from y1, and then you need to subtract y1 from y2, and so on. Okay, so that will give you what? That's give you first order finite difference of an entry yr. Okay, and you can extend the same thing as well. You can find second order differences as well. That is del square yr, and then it means you have to apply that difference on the first order difference again, which could be written in this form, and then we can write this in this form as well, and so on. Okay, right. Now, how do we construct the difference table? There's a proper way to construct a difference table. Okay, like we are having argument values. These are the values of x, these are the input values, which is explained earlier, that x1 could be written in the form of x0 plus h, x2 that can be written as x0 plus 2h, and so on. Okay, the same thing for values of y. We represented that y0 is f of x0, and this is y of fx1, and so on. Now, keeping in mind, we can write this one as del y0, that basically equals to y1 minus y0. Okay, that's the difference between these two values. And usually what do? We find the difference of these two values and place in between them. It's sometimes important when you pick the differences from difference table and you would use them.
Then we find the difference of these two values, y2 minus y1, and we simply place that in between them. So delta y1 or del y1, whatever you call it, this is first order difference of y1, which will be y1 y2 minus y1. Okay, similarly for y2 it would be something like y3 minus y2, and so on, and we are basically placing them in between the two values, right, just to have a proper picking out different type of differences from the difference table once you know the difference table. And then for the second order difference, what do? We simply find the difference of these two. That basically means delta y1 minus delta y2. Right, so we can write this one as delta y1 minus delta y naught, which will give you basically what? That is delta square y naught, a second order difference. And obviously you have to place that in between these two numbers and obviously in front of y1. And if you simplify this, what would happen? You see this one minus this one, so y2, and then we get what? We get y minus y1 and then minus y1. तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास minus 2y1, ये हमारे पास आ जाएगा. Okay, and then obviously it will be give you what? It will be giving you what? That will be giving you plus y naught. So the second order difference can be found directly by using this formula as well, y2 minus 2y1 plus y naught. And then the same thing for delta square y1, it will be the difference between these two, and you have to place that in between them, and so on. This is the difference between delta y2 minus delta y1, जो कि अब इसलिए हमें क्या देगा, ये इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना. तो इट विल बी y3 minus 2 times y2 and then plus y1 and so on. So that is something called a difference table, and that's the proper way to write a difference table. Okay, so difference table should be written in this form, just for the sake of picking some, as I said earlier, differences from the difference table. Okay, let's consider a simple example. You see, we are having the values of x. Obviously these are known as arguments, and these are the entries. We don't care about these values when we are finding a difference table. Obviously in case of divided difference table, which we'll be discussing later on, we would obviously using these values as well, but in this case you see the common difference is same, so that's why we are not using them. Now if you subtract simply 13, find 13 minus 4, that is 9, you would write that here, and then 34 minus 13, you would simply write that here, and in between them, obviously, as I said earlier, 73 minus 34, you would write that between these two numbers, and so on. That's the first order differences, okay, for y. For the second order differences, you will be subtracting this 9 from 21, to which give you 12, 39 from 21, that is 18, 63, and so on, so on. And then this is the fourth order difference, which obviously is 0. And the remaining differences obviously will be considered as 0 because we cannot find them. We are having only 5 observations. Okay, now the question is, how do we find that by using a calculator? So let me open a calculator first, and then I'll talk about it. Yeah, this is the calculator, and let's consider calculator here. Okay, the first step is you have to, okay, let me move this from here. Not sure how to do that. I don't know how to do that. Anyway, I don't need that. So what would I do? You would first go to the mode setup, and you have to convert that into computational, obviously, as the calculator stuff. So it is 1, so you simply press 1 to get that in math form, and then you need to do what? You have to find all these values, right? You have to input this one, and then you have to find these values.
For that purpose, what do? We simply label these quantities as some variables which we are having in obviously in calculator. Okay, so if I just write, let me go there, and if I could, I can't access then. So if we label this one as A, let's suppose this is my A. Okay, let me do that over there, and then let's suppose this is my A. Okay, this is my A, this is my B, this is my C, let's suppose this is my D, and this is my E. So what would I do in calculator? I'll simply finding the difference of these two, and I would call that A back. That is my what? This is my again another A, and that is basically B minus A, keeping in mind this is my B minus A, right? And I would call this one as B for the next time, and that would be for me as C minus B. Okay, and I would call this one C, और ये हमारे पास होगा D minus C, और इसको फिर से मैं क्या कहूँगा, आई विल बी कॉलिंग दिस वन एज D, और मेरे पास D क्या होगा, ये मेरे पास आएगा E माइनस D. ओके, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कंप्यूट हो जाएंगे, एंड यू सी दैट ये वैल्यूज दोबारा से A B C D में स्टोर हो गए हैं. ओके, लेकिन इस बार हमारे पास E जो है वो ख़त्म हो गया. जब यहाँ पे मैं लूँगा अगेन इसको मैं A कहूँगा. ओके, एंड इन दिस केस अगेन इट विल बी द सेम B माइनस A. लेकिन अब यहाँ पर B माइनस A का मतलब ये है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना, ये जो वैल्यूज, बिकॉज अब A में ये स्टोर हो गया, B में ये स्टोर हो गया. इसको मैं क्या कहूँगा, इसको अगेन मैं B कहूँगा, एंड आई विल बी कॉलिंग सिंपली दैट इज C माइनस B, विच इज़ ऑब्वियसली नो दैट. एंड इसको मैं क्या कहूँगा, अगेन इसको मैं C कहूँगा, एंड दिस विल बी D माइनस C फॉर मी. नाउ यू सी इन दिस केस मेरे पास जो D की वैल्यू कोई पुरानी रहेगी, जहन में रख लें. So that is D minus C, and then again I would call this A, which will be again B minus A, and I would call this one as B, which will be obviously C minus B, and so on. And then last time it will be having again, we call this A, which will be again B minus A. So we'll be labeling all these as it is. What you can see there, I'm just getting rid of it, I'm just removing it. Okay, to go back to calculator and see what I would do. I would simply call these variables as, first I will simply alpha, and then if you see A here, so I'll simply call this A, and then we go to this quantity here which is giving you equal with shift, and then you press this, no, what I'm doing, it should be, no, let's go back, shift, and this one, is it question mark there, maybe shift, and yeah, we have equal somewhere. Let me clear this. Okay, okay, let me clear everything again, let me do that again. So let's suppose we go to math mode, that is obviously on 1, which is already there now. So I would define first A, which is here. Okay, and then press A here, and then I thought it should be, no, it's not like that. Again I'm doing something wrong, so it's this one with this, no, it's not there, sorry. I'm just looking for equal sign somewhere, because you cannot use this
equal, because it will give you just display the value of a what you stored a bit earlier. So I need to go for, yeah, it should be here, but I don't know. It is there. Let me do that again. So alpha, and then I have a here. I don't know, I was making some mistake, I'm sorry for that. So let me again alpha, and let me press this one to get equal. You see this one. Okay, so basically a equals what? That is, as I have done a bit earlier, we call this b minus a. So you'll be equating that. Again you go to alpha and you press b. Now we go for minus a, then alpha, and then we go for a again. Now what would you do? You would simply go for the semicolons here. You see alpha, and then we have this one, and then next time we call it again. So you have alpha, and then you press b now, and b will be what? With alpha, and press equal this one, calc, and that is basically c minus b. So we go back to alpha, and then we have to have c there. Okay, and we have c minus b. So again alpha, and then b, right? So we will be taking again with alpha, and then colon something. Okay, then you take for c. We go for c now. अगली जो वैल्यू होगी वो c के लिए हमने करना है, तो c यहाँ पे है, और c जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली d माइनस c. ओके, सो अगेन अल्फा, एंड हमारे पास d यहाँ पे है, so you can simply take d minus c. okay, and again obviously ये स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा, लेकिन बाद में फिर जो डिफरेंसेस होते हैं वो इजीली कंप्यूट हो जाते हैं. okay, and then the next value is d. okay, so d will be what? That will be e minus d then. So d is here, d, and then again alpha with equal, and then we have e minus d. E is here. We were up to e, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, आप f पे भी जा सकते हैं, आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, x और y भी ला सकते हैं इसमें. So that is e minus d, which is here. Okay, once you have done that, what would you do then? You would simply press this calc. Okay, when you press calc, the calculator would ask you, give me the values of all these a, b, c, d, e. You see, so if just give it calc, so it will be asking you to give me value of b, which is 13. Accordingly, you have to put the values. Okay, then it will be asking for a, so you'll be going and giving it 4. Because I have taken b minus a, if you remember, if you take that as minus a plus b, then it will be asking for a first. Okay, keeping in mind. So a is 4, again equal. Now it asks about c. C is 34. Okay, and then it asks about d, which is 73. So you simply put that 73, and then press equal. It will ask about e, which is 136. So you put 136, and then you press equal. So you get 9, the first difference, you see, and then you press equal. Okay, you will get the next difference is 21. You will simply write that there. Then you will get what? 39. You see this value, and then we get d, which will be 63. Keeping in mind, if you press this thing again, what would happen? It will display this number, but we don't need that. Okay, it will be simply the same, this, because e is already there. Now again is asking for b. Now what would it be? In this case will be 21, which is the same. You don't need to put that value again. So press equal. The a is 9, press equal, and then we have c, which is 39. Again press equal. Then next is 63. Again press equal. It will be asking for e, which is already there, but you simply press equal. So you'll be getting what? You see 12. The next difference will be 18. The next difference will be 24. And then the next difference will be, if you go back, so you see that is, we don't need this d minus e, because it's come over here. We don't need that, right? So next time it will again asking for b. So b will be having 18 now, this one, whereas a, that is 12 here,
and you will need up to C only, that is 24. Obviously it will be showing 63 for D, which is this value. Now we don't need that anymore, and for that purpose obviously it replacing the same number ये जो 136 है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. Okay, if press equals you get 6. For the next one you will be get 6 as well. बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो वही पुराने आएंगे, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ये दो वैल्यूज़ लिख लेंगे और फिर इसके बाद आप दोबारा अगर प्रेस करेंगे इसको तो वही पुरानी वैल्यू आएंगी, वहाँ से डिफरेंस आएंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ना बी 6 है और ए भी 6 ही आ गया, बाकी सारे जो हैं पुरानी वैल्यूज़ रहेंगी तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो लास्ट हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है दैट विल बी ए. ओके, विच इज़ द लास्ट डिफरेंस. द सेम कैन बी प्रोसीड, जो आगे आपकी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए आप इसको कर सकते हैं. ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया है. अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो सिंपली लीव अ मैसेज इन द message box, so I will get back to you then if you have any query regarding using calculator. At the same time I may discuss that with MATLAB as well. So MATLAB में हम क्या करेंगे, you see I've already done that because at that moment if you do it so थोड़ा सा टाइम लेता है वो, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका आउटपुट मेरे पास डिफरेंस टेबल होना चाहिए. ओके, और उसको मैंने लेबल कर दिया माई अंडरस्कोर डैट, जिसमें आप ऑब्वियसली यू कैन गिव इट एनी नेम, ज़रूरी नहीं कि आप माई डैट दे दें. माई अंडरस्कोर डैट दैट बेसिकली इज माई डिफरेंस टेबल. आई विल बी इनपुटिंग एक्स एंड आई विल बी इनपुटिंग वाई एज वेल. ये मेरे इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये वो वेरिएबल हैं जो कि मैंने इनपुट देना है. एक्स और वाई दोनों हमें देने होते हैं, ठीक है. ओके, एंड देन लेट मी ब्रेक बैक. So we see that this part is basically important for displaying difference table exactly in the same way what he had here. Exactly, if you want to express that exactly in this form, so yeah, we need these steps. Otherwise, if you simply if you just want to find the differences, it will be finding that in a matrix form. वो एक मैट्रिक्स फॉर्म बना देगा और बाकी फिर वहाँ से आप वैल्यू पिक कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से फिर आप पिक नहीं कर पाएंगे, इसमें इशू होगा आपके लिए. तो अगर आप एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लेना चाहते हैं जो यहाँ पे हमारे पास है, तो फिर आपको ये स्टेप्स करने होते हैं. ये हेडर में आ जाता है, सिंपल डिस्प्ले कमांड है जो कि इसको कमांड डिस्प्ले कर देगा, ऊपर डिफरेंस टेबल आ जाएगा. ओके, और ये आपके पास पहले कॉलम में एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, वाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर इसके बाद ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड व्हाटएवर आप जो भी करना चाहते हैं, सो ऑन. Right, and the second is just to draw a line under this one. If you don't want to have a line under this one, so it obviously doesn't matter. n जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ x. लेंथ बेसिकली क्या करता है, मेजर करता है एक वेक्टर की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको. राइट, मैटलैब में लेंथ का जो एक साइज़ का कमांड होता है और एक लेंथ का कमांड होता है. लेंथ जो है वो बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो साइज़ होता है ना, यूजुअली हम रो बाई कॉलम करते हैं, तो उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो लेंथ से आता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिक्स ए ले लूँ, इफ़ दैट इज़ माय सिंपल मैजिक मैट्रिक, आई एम गोइंग फॉर अ मैजिक मैट्रिक्स 3, आई विल बी गेटिंग 3 क्रॉस 3, अ गुड मैट्रिक्स ऑब्वियसली. तो इसका साइज़ जो है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है, बट आई डोंट नीड 3 क्रॉस 3. लेट मी टेक अ मैट्रिक्स ऑफ रेंट एंड दैट्स ए. इट विल जस्ट जनरेट अ रैंडम मैट्रिक्स इन मैटलैब. लेट मी टेक इट 5 क्रॉस 3. Right, so if just I display this one, so I'll be getting 5 cross 3 matrix. So there are 5 rows and 3 columns. But if I check the size of this matrix A, it would give me 5 cross 3, you see. But if I check the length, it will give me the bigger number among them. Okay, so if I go for length of A, let's suppose, so that will give me 5 only, see. So usually length is used for row matrices or column matrices. In that case you need only the number of rows or only you need the number of columns. So in this case obviously x is usually a column and y is also a column. So that's why we just using a length. Length is a good command to be used here because we will be going up to that point. Now you see as I explained earlier, for all values from 1 to n minus 1, okay, because we are only finding differences up to the last one, the second last one. The last one has no forward difference obviously, and similarly we will talk about that later on. So it is the difference between two consecutive values. It's yk plus 1 minus yk. इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस फाइंड करेगा और कहाँ पे स्टोर करेगा इसको,
ये फर्स्ट कॉलम में स्टोर कर रहा है उसका, ओके, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेगा एंड सो ऑन, ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये एक कॉलम इसका आ जाएगा। ये हमने सपोज किया इनिशियली, ओके, इसको हमने इनिशियली इसको ये एस्यूम कर दिया है एंड दैट आफ्टर दैट पर्पस हमने इनको दोबारा डिफरेंस लेना है, तो उसके लिए हमें दो लूप चाहिए होते हैं। एक लूप ये वैल्यूज़ के लिए, इनके लिए चाहिए होगा, और एक लूप हमारे पास के लिए भी होगा, ओके। तो इनका डिफरेंस हमें लेना होता है। तो फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, इसलिए हमें टू से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमने क्या करना है, वी हैव टू गो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू n माइनस आई। n माइनस आई बेसिकली मीन्स कि आपने कौन सा डिफरेंस लेना है, बिकॉज इफ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे ये हर स्टेप में वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। इसी यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 5 थे, अब ये 4 हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, तो हर बार वो क्या होता जाएगा, वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको n माइनस आई तक जाना होता है, ओके। And the rest is straightforward. Simply she find this value, which is the difference of now these values. Difference table k plus 1 I into I minus 1 and minus difference table this one. So again the next value, you see k plus 1 value, and subtracting from that you are just k value. Okay, and this is fixed obviously because you will be taking difference in the same column. Okay, up to here you will be okay because the difference table is already constructed. Okay. From here onward is basically setting up what? It's setting up the distances, the positions that you need to place the values between two numbers. Okay, इनको आप दो numbers के बीच में place करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से करना है। अगर आप ये ना करना चाहें just okay, यहाँ तक भी आप stop कर सकते हैं, you can just run it and you will stop that here, और आप difference table को find करेंगे तो एक matrix form में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि exactly मेरे पास इसी form में हो जो यहाँ पे मैंने show किया था, तो उस केस में obviously you'll be doing these steps as well. This command is used if you divide n by 2 and you get a remainder 0. It means if n is exactly divisible by 2, तो आपने p को 2 से डिवाइड करना है, n को 2 से डिवाइड करना है और m को 2 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर n जो है वो 2 से डिविजिबल ना हो तो n को 2 से डिवाइड करके उसको फिक्स करना है। ओके, फिक्स कमांड मैटलैब में यूज़ होता है। उसी अगर आप फिक्स कमांड किसी भी नंबर पे यूज़ करें, लेट्स सपोज दैट इज़ 2.3, ओके, इफ यू यूज़ दैट इट विल गिव यू 2, right? So it will basically take the integer part of that number, and then it's plus 1 because we'll be taking the next number as well. So we'll be taking p as 2 and m is in that case, in this case 3, and then we'll be displaying that. You see, you are taking this the distance, okay, this the distance, then you display the value of x, the value of y, okay, and then you simply take all these and then you simply display the difference. You see, you're taking that much difference, and then you start from here, you just give the space here, that much space, and then you display this value here, okay. And then for this one, you see, again, if you have k equal to I, and then you display this value for the second order and so on, and you see, then again for the next one, you see the same thing, and so on. So at the end it will be displaying just a difference table in this form, right? So let's suppose we take some values of x, the same value what we had here, and we see what do we have there. So let me take x is equal to 1 to is it 5, I presume? Yeah, it is 5. तो x 1 से लेकर 5 तक मैं ले लूँगा, okay, and y की जो values है वो हमें define करनी पड़ेंगी. So y is equal to that is अगर आप देखें तो 4, 13, 34, it's 4, 13, 34, and the two more values I would need 73 and 136. So 73 and 136. Keeping in mind x और y दोनों का size क्या होना चाहिए? They must be same. So we have x and y now. I would simply display that difference table, and then I want to use this one is whatever. I will just give x and then y. So it will be displaying a difference table exactly in the same form what we had there. Okay, if I run this and just get the difference table exactly in the same form, right? You see, we are having x values 1, 2, 3, 4, we have y values, and then we have first difference, the second difference, and then the third difference. Okay,
So if you see, we are having exactly the same thing, this one. Right, I hope it's clear to everybody now. So I move to the to the presentation again, and let me now explain the rest of things. Okay, so let's go further. अब हम बात करते हैं different types की. Difference operators जो हैं उनके different types हैं. Some of them are forward difference operator, backward difference operator, then we have central difference operator, then we have mean operator and shift operator. Obviously these operators are used to link these operators among themselves. So we'll talking one by one. Okay, so forward difference operator, what we explained earlier, that was obviously a forward difference operator, right? We denote that by delta, we may call del obviously, and that is defined as we did earlier, that is del fr. If we apply an fr, we have used notation yr there, doesn't matter. So that is fr plus 1 minus fr for r equal to 0 up 1 up to n minus 1 and so on. As I said earlier, the last entry will not have any forward difference. Okay, it might have a backward difference and so on. Keeping in mind, what do we mean by fr plus 1? That basically means fxr plus h, whereas fr plus 1 by 2 we need somewhere that will mean f of xr plus h by 2. Okay, and so for some specific values of r, if we take r equal to 0, we get the first order forward difference of f naught, which will be f1 minus f naught. This will be f2 minus f1 for f1, the first order difference, and so on. We can also find the second order differences as well, which is denoted by del square fr, and is obviously given by, that is the, as I said earlier, it is the first order difference of the first order difference. जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है उसका आपने दोबारा से difference लेना है, which could be simplified in this way. Del fr is what? That is fr plus 1 minus fr from here, which is defined in this equation. And then we simply take applying del. Del operator is a linear operator, तो ये दोनों पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा, del fr plus 1 और माइनस del fr. अब del fr plus 1 को दोबारा करेंगे इस रूल से, तो ये fr plus 2 minus fr plus 1 हो जाएगा. See, that's what we had. So if we add fr plus 2 minus fr plus 1 because of this one, minus because of del fr, again putting the value from here, and we simplify it, we get fr plus 2 minus 2 fr plus 1 plus fr. That is the second order forward difference for fr. Keeping in mind, in this case r value will be starting from 0, but it will be ending up to n minus 2. Okay, the step by step will be decreasing this value. आखिर जो वैल्यू होगा अब ये n minus 1 पे जा रहा है, सेकेंड ऑर्डर n minus 2 पे तक होगा, थर्ड ऑर्डर जो होगा फिर n minus 3 तक होगा, एंड सो ऑन. कीपिंग इन माइंड, अगर हम ये जो x नॉट लेते हैं, वी टेक दैट एज अ टॉप वैल्यू, x नॉट x1 एंड सो ऑन. बाज़ औक़ात आगे जाके आपको ये क्लियर होगा जब हम मज़ीद इसमें लेक्चर्स करेंगे, वीडियोस आपको मैं वो करूँगा, तो इसमें ये होगा कि बाज़ औक़ात हम x नॉट बीच में भी ले लेते हैं. ओके, फॉर ऑब्वियसली सर्टन पर्पसेस विल बी डूइंग दैट. ओके, and so on. The third order will be represented by del cube fr, and is obviously given by this way. You see, it is the first order of the second order differences. इनका अपने difference लेना होता है. तो यहाँ पर ये find कर चुके हैं, which is this one, and then we go for the del apply. Del is linear operator, तो इस पे apply करते हैं, इस पे apply करते हैं और इस पे भी apply करते हैं. और again यहाँ पर जब आप इसको first order करेंगे तो fr plus 3 minus fr plus 2 होगा, दूसरा जो fr plus 2 और fr plus 1 होगा, and so on, putting values of these and then simplifying it, we get fr plus 3 minus 3 fr plus 2 plus 3 fr plus 1 minus fr. अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 है और ये माइनस 1 अगेन. ये बेसिकली a माइनस बी पावर 3 जो होता है उसके बायनॉमियल कोफिशिएंट्स ही आते हैं. ये a माइनस बी पावर 2 के बायनॉमियल कोफिशिएंट्स आते हैं, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 3 1. तो यूजुअली जब हम ये एक्सपेंशन करेंगे, आगे इसको लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके, अगर फोर्थ ऑर्डर हम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 4 and then we have 6, then minus 4 and then we have 1. So मतलब वही जो बायनॉमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको हमने यूज़ करने हैं, और यहाँ पर fr plus 4 से फिर स्टार्ट होगा. ओके ओके, now how do you pick these differences in from the difference table? Okay, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ डू यू पिक इट, असल में आगे जाके फिर हमने कुछ फार्मूलाज को यूज़ करना है, और उन फार्मूलाज के लिए हमें ये डिफरेंसेस चाहिए होते हैं. तो अगर आपको f नॉट के डिफरेंसेस चाहिए होते हैं या y नॉट के डिफरेंसेस चाहिए होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस विल बी दिस वन, द सेकंड वन विल बी दिस वन, थर्ड विद दिस वन, फोर्थ विद दिस वन, एंड सो ऑन.
ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने क्या करने हैं, इसको आपने सिंपली लेने होते हैं, जिसको हम ये डायरेक्शन लेते हैं। अगर आपको x1 के लिए चाहिए तो सिंपली यही लाइन आप इधर लेके आते हैं यूँ। अगर आपको x2 के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आपको x3 के लिए चाहिए तो आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं। x4 के लिए है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लास्ट जो एंट्री है y5 उसके लिए नहीं होता डिफरेंसेस। तो ये उसके डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम इसके डिफरेंसेस को लेते हैं। ओके, right. If you consider this example again, so in this case we want to find forward differences of 4, first order is 9. अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्शन आपने ऐसे पिक करना है. You might have a line there. So you see, just draw a line in this direction. So we have 4, 9, the first order difference for 4. This is the second order, third order, fourth order. And 13 के लिए करेंगे तो यही लाइन यहाँ से आप ड्रैग करके इधर लेके आएंगे. तो 13 के लिए फर्स्ट ऑर्डर जो है वो 21 है, सेकंड ऑर्डर जो है वो 18 है और फिर 6 है, एंड सो ऑन. ओके, so that's the way to pick differences. Okay, the next one is what? The next one is backward difference operator, जिसको हम डिनोट करते हैं, I'm sorry, my mistake, it's nabla. Okay, this is the other way around. So it's nabla notation for it, and we have nabla fr, which is fr minus 1. इसी फ़र्क इसमें क्या आता है, इसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये जो होता है अगर हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो ये एफ आर का बैकवर्ड होगा, लेकिन ये फॉरवर्ड फिर एफ आर माइनस 1 का होगा. आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ व्हाइल. एफ आर माइनस 1 बेसिकली मीन्स एफ ऑफ एक्स आर माइनस एच, एंड आर माइनस 1 बाई 2 समवेयर वी नीड दैट, सो आई विल बी यूजिंग एक्स आर माइनस एच बाई 2. तो इसी अगर आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम यहाँ पे नेबला एफ नॉट लेंगे तो वो हम फाइंड नहीं कर सकेंगे अनलेस अगर आपके पास f माइनस 1 मौजूद है तो फिर तो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखें नेबला f1 इज इक्वल टू f1 माइनस एफ नॉट. तो ये f1 माइनस एफ नॉट जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस में f1 का f नॉट का फॉरवर्ड डिफरेंस था, तो ये f नॉट का फॉरवर्ड डिफरेंस है, f1 का बैकवर्ड डिफरेंस, बाकी सेम है. डिफरेंस टेबल विल रिमेन द सेम. ओके, whereas in case of f2 minus f1 it was a forward difference, first order forward difference of f1, whereas ये first order backward difference है f2 का, and so on. Okay, the same thing for second order as well, the same thing for third order as well. You see we have the same coefficients, just the difference in the values of fr. यहाँ पे वही coefficients है, 1 minus 2 1, यहाँ पे 1 minus 3 3 minus 1, next होगा 1 minus 4 6 minus 4 1. Okay, so yeah, that's the big backward differences. In this case what do we do? You see the setup will be changed. यहाँ से हम शुरू करते हैं usually. Okay, so it will be what, y5 के लिए अगर हम backward differences की बात करेंगे तो ये इस direction में आपने लेना है. Let me draw the line. So yeah, this direction. Okay, अगर आपको y5 के लिए चाहिए तो you see that the first backward, that the second backward, third backward, and so on. Okay, for the y5. Okay, and then if you go for y4, so this is the first backward, second backward, third backward, and so on. So these are basically, and we will be doing in this direction. There's a bit typing mistake. It should be 5 5 5 5. यहाँ पे सारे के सारे 5 होने चाहिए, यहाँ पे सारे फिर 4 होने चाहिए, यहाँ पे सारे फिर 3 होने चाहिए, यहाँ पे सारे फिर 1, और obviously यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे फिर 1 होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा नोटेशन का थोड़ा सा इशू है. इट मस्ट बी नेबला f1. ओके, दैट्स नेबला y1, it will be nebula y2, it will be nebula y3, and so on. So this is just a typing. Okay, so these symbols are a bit confusing, so you should go for, if I make the corrections, so this is what, this is nebula y1, this is nebula y2, this is nebula y3. Okay, this will be nebula y4, and this will be nebula y5. The same thing now, this will be what? This will be nebula y2, this will be nebula y3, this will be nebula y4, and this will be 5. This will be now nebula y3, this will be 4, this will be 5, this will be 4, this will be 5, और ये फिर क्या होगा, ये फिर 5 ही होगा. तो इस डायरेक्शन में ये चेंज होंगे 1 2 3 4 5, या इन दिस डायरेक्शन इट विल बी फिक्स 5 5 5 5 5.
यहाँ पे जब हम लेंगे इस डायरेक्शन में ये लाइन आपने पिक करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 4 4 होगा। जब नेक्स्ट लाइन को हम पिक करेंगे यहाँ से इधर से ये वाली लाइन, तो ये हमारे पास 3 के लिए होगा, ये 2 के लिए होगा, ये 1 के लिए होगा। ओके, जहन में रख लें कि वाई नॉट के लिए देयर इज़ नो बैकवर्ड डिफरेंस अगर आपने एक्स नॉट को टॉप पे लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपने x -1 को भी डिफाइन किया हुआ है, समटाइम्स वी डू दैट, तो फिर इस केस में भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आएगा और वो फिर डेल एफ नॉट नेबला एफ नॉट के लिए होगा, वाई नॉट के लिए होगा। Okay, so let's move forward further. In this example, if you want to pick those backward differences, so we can find the maximum number of backward differences are for 136. Okay, then this one, then this one, then this one, and there is no backward difference for what? For 4. See, this is the direction, so we are having 4 differences for it. You'll be having 3 differences for this, only 2 differences, and 1 difference for 13, and there is no difference for 4. So that is the direction in which direction we take basically what? All these differences. Okay. Now the next operator is known as central difference operator, and that is denoted by delta fr, and which is defined as fr plus 1 by 2 minus fr minus 1 by 2. And if you find central difference of r plus 1 by 2, that's a non-tabulated value. This is the tabulated value, okay, and these are also non-tabulated values. Okay, central is a bit tricky, so yeah. So I'll be explaining that जब हम central difference formulas की तरफ जाएंगे वहाँ पे. The second order is obviously given by the same rule. We can simply extend that to this one, and then we find this one. So using del fr plus 1 by 2 by this formula, and for r minus 1 by 2, be simply replacing r with r minus 1 by 2 here to get this way. See, this is fr plus 1 and it's fr. Here is fr minus 1. Simplify that. It is fr plus 1 minus 2 fr plus fr minus 1. The same thing for third order as well, and so on. And then we have a difference table. In that form, you'll be taking values in this direction. Again, keeping in mind, yeah, there will be no central difference for this one. Okay, that will be delta f1 by 2. I'm sorry, again these subscript are what they are not right. Okay, this is 1 by 2. This will be central difference of 1. If I change that just for sake of understanding. Okay, so this is basically not 0. This is basically the 1 by 2 one. Okay, this one will be 3 by 2. This one will be 5 by 2. Okay, this one will be 7 by 2. Right, and this is basically 9 by 2. Whereas the second order will be starting from where this is the second order central difference for y1. This will be going for y2. This is for y3, and this is for y4. Then again this one will be for 3 by 2. This will be for 5 by 2. And this will be for 7 by 2. Okay, and then again this will be for 2. This will be for 3. And this will be for, again if you say fifth order, so that will be for 5 by 2. Right? Yeah, it's my fault because of this subscript I have used wrong ones. So yeah, that's a central difference table. And how do we pick them? By using the next slide, that is this line. You see you will be taking differences in this direction. For f2 you will be taking these. For f3 you will be using these ones, and so on. यहाँ से आप एक बात नोट कर लें कि जो टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं उनकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो हैं 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2 हैं. राइट, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू इनके बीच में है जो कि नॉन टेबुलेटेड होगी वो y1 by 2 होगी, यहाँ पे ये y3 by 2 होगी. तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस
और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस, या जनरलाइज कर सकते हैं कि जो ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज़ के होते हैं, जबकि इवन ऑर्डर जो डिफरेंसेस हैं वो टेबुलेटेड के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि y1 का भी है, y2 का भी, y3 का भी, y4 का भी है, ठीक है। द सेम थिंग यहाँ पर y2 का है और y3 का है, तो ये इवन ऑर्डर जो है वो टेबुलेटेड के होते हैं, जबकि ऑड ऑर्डर क्या है वो नॉन टेबुलेटेड के होते हैं। Okay, let's take an example. So again, if you check that one for 3, let's suppose so 34 के लिए ये इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, ये इसका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर नहीं है। ओके, अगर हम 73 के लिए बात करेंगे तो इसकी सिर्फ ये सेकंड ऑर्डर है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। और 5 के अगर आप चेक करेंगे तो कोई नहीं है, 1 का चेक करेंगे तो कोई नहीं है, 2 का सिर्फ सेकंड ऑर्डर है और बाकी नहीं है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फिर हमने इनके इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए होते हैं। ये 1/2 के लिए, 1.5 के लिए, 3/2 के लिए है। ओके, ये आपके पास फिर वही 5/2 के लिए होगा, 1.5 जो होगा, 2.5 सॉरी, एंड सो ऑन। Okay, the next operators, they are not basically the shift operator, they are not basically the difference operator, लेकिन ये यूज़ हम करते हैं to develop difference formulas for interpolation. Okay, so shift operator is basically shifting the values. If you are at the r position, applying shift operator on it, आपको r+1 position पे ले जाएगा। अगर आपने डबल स्टेप ले लिया, e स्क्वायर कर दिया, तो that basically means you go to 2 steps there. जनरली अगर हम p स्टेप्स की बात करेंगे तो दैट विल बी fr प्लस p। अगर हम -1 लगाएंगे इसमें पावर तो क्या हो जाएगा, विल बी गेटिंग 1 स्टेप बैकवर्ड, okay, and so on. Whereas mean operator, which is obviously used in some central differences based formulas, just for sake of simplification, अगर आप fr पे mean operator अप्लाई करते हैं तो आपने इन दो वैल्यूज़ का एवरेज लेना होता है, उसकी अगली वैल्यू हाफ पे और इसकी पिछली वैल्यू हाफ पे, इनका एवरेज आपने लेना है। ओके, और यू कैन से अगर आपने इन दोनों का एवरेज लेना है तो उसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कहाँ पे प्लॉट करना है, उसको आपने fr+1/2 पोजीशन पे करना होता है। There are some relations between these operators. So we talk about first del and e. You know del can be defined in this form, and this is what, ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ये e fr हो जाएगा -e(fr), and they see that इसे हम fr बाहर निकाल देते हैं, तो we have e-1 fr, and then from here fr is an arbitrary function applying on del and e-1, so it means del is basically equal to e-1, or we can say e is equal to 1 plus del. ये obviously यूज़ होता है later on जब हम फार्मूलाज डेवलप करेंगे। अगर हम नेबला और ई की बात करेंगे तो नेबला जो था इट वाज डिफाइंड एज fr-1. Now if you apply or express this in terms of shift operator, so that was defined a bit earlier as e-1 fr, और यहाँ पे फिर अगेन fr जो है वो आर्बिट्ररी होगा, तो we have e inverse is equal to 1 minus e inverse. This is equal to, nebula is equal to 1 minus e inverse. You see, nebula equals 1 minus e inverse. अगर आप यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाएगा, और फिर आप उसका नेगेटिव पावर लेंगे, सो e इज इक्वल टू 1 माइनस नेबला इनवर्स। ओके, ये बेसिक है, फिर आगे जाके इन सब को हम आपस में रिलेट करते हैं, मैं शो करने वाला हूँ थोड़ी देर में। डेल्टा और ई का क्या रिलेशन होगा, अगर आप देख लें इसको, तो डेल्टा एफ आर इज डिफाइंड इज दिस वन, दैट इज e पावर 1/2 एफ आर माइनस e पावर -1/2 एफ आर, और फिर एफ आर को बाहर निकालेंगे, एंड देन यू सी दैट एफ आर इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, so these two quantities will be same, e power 1/2 minus e power -1/2. And then we have a mu and e as well, which is obviously almost same because we are having only 1/2 here, and then minus को replace करना है plus के साथ, तो यहाँ पे same step आएगा, बीच में plus आएगा, so we have mu is equal to 1/2 e power 1/2 plus e power -1/2. okay, अब अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें डेल को नेबला के फॉर्म में, तो आपने इन दोनों रिलेशन को यूज़ करना है। यहाँ पर e बराबर है किसके, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस नेबला इनवर्स, यहाँ पर e बराबर है 1 प्लस डेल के, तो इट मीन्स कि 1 प्लस डेल बराबर हो जाएगा 1 माइनस नेबला इनवर्स के। अगर मैं कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल मैं कर लूँ, इन दोनों का आपने इक्वेट करना है, सो वी गेट व्हाट, 1 प्लस डेल, that is equal to 1 minus nebula
whole power minus 1, which may be simplified as इस 1 को उधर लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा del is equal to 1 minus nebula and power minus 1, and then we have minus 1 this one as well. ठीक है, जिसको हम फर्स्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहे तो ये हमारे पास, इसको आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेबुला माइनस 1, और फिर जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है नेबुला डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेबुला। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू नेबुला इनटू 1 माइनस नेबुला पावर माइनस 1। अगेन इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ पावर को तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो डेल जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर आप नेबुला को एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ डेल तो फिर आपने क्या करना है, ये माइनस पावर इधर से ख़त्म करना है। ठीक है, और इस पावर को इधर लेके आना है इसके ऊपर, बिकॉज जब एक तरफ से नेगेटिव पावर ख़त्म करते हैं तो दूसरे पे नेगेटिव पावर लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको उधर लेके जाते हैं और नेबुला को इधर लेके आते हैं, और फिर आपके पास एक्सप्रेस हो जाता है नेबुला इन टर्म्स ऑफ डेल। यही चीज़ फिर हम कर सकते हैं कि डेल को ई के साथ, डेल्टा को ई के साथ कैसे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कर दिया कि डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ई इज़ ओके, बट ई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड को। इस केस में इसको आपने क्या करना है, इधर से भी स्क्वायर करना है और इधर से भी स्क्वायर करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने ई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, उसको सॉल्व करना होता है। सो द रिलेशन आर बेसिकली गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सी E in terms of del is 1 plus del in terms of nebula, which is already proven, and then I said E in terms of delta, which is obviously by taking square, and then you'll be getting quadratic equation in terms of delta, and then using quadratic formula to find this expression for E in terms of delta. The same thing, del is equal to E minus 1, okay, and del in terms of nebula is a bit earlier explained, and then we have this one, because simply value you have to put the value, अपनी value उधर put करनी है ताकि in terms of delta आप explain कर लेंगे, so, and so on. You see, we are having these relations with each other, right? I hope it's clear to everybody. You can prove them. If you have any question, you can just drop a message. I'll get back to you. Okay, so thank you very much for your time and for watching the video. See you in next video.